Thank you, everyone. Thank you, everyone, for joining. Inshallah, we will continue today with our series of lecture. Today will be a unique session, as we would start with a question. This question will help you reflect and think back and think of those days where you had this question. Either verbally you have asked or in back of your mind. Bismillahirrahmanirrahim. May Maulai Zaman, Imam Zaman, Shah Rahimul Husaini, Hazir Imam, be with us. His Tawfiq, Taeed, Himmat wa Yari be with us. Ya Maulai Mehrban, Tawfiq, Taeed, Himmat wa Yari Maula. आज हमारा ये सेशन और इंशाल्लाह ये सेशन आप तमाम के लिए एक सोच के साथ होगा। एक ऐसा सवाल जो या तो आपने अपनी जिंदगियों में कभी पूछा था, कभी अल्फाजों के साथ और कभी अपने सोच के साथ, लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल जरूर था कहीं न कहीं अपनी जिंदगियों में। And what was that question? If the core principle of Imamat is Nooran ala Noor, meaning one Noor after the other, Father Imam, Son Imam, Son Imam, Father Imam, then how do we understand that our 40th Imam left his grandson as 49th Imam and not his son? जो एक सवाल हमारे सामने है वो ये है कि जब हमारे दीन का पाया और रसूल इस बात पर रखा गया है कि हमेशा नूरन अला नूर, एक के बाद दूसरा इमाम होगा, यानी कि वालिद इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम, वालिद इमाम, और ये सिलसिला आदम से चला आया है। और हर इमाम ने अपने बेटे को इमाम बनाया। तो फिर क्या वजह हुई कि शाह सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी जान उस इमाम से फिदा हो, उसने अपने बेटे को छोड़कर अपने पोते को इमाम बनाया? ये सवाल है, और ये सवाल आपके ज़हन में कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में जरूर आया है। कभी आपने पूछा और कभी नहीं पूछा, लेकिन सवाल हमेशा आपके ज़हन में रहा। So let's come and analyze. Yesterday, I was listening to one of the Maula Bapa's interview, meaning
Imam al-Waqt, Shah Karim's interview. In his interview, he said, my grandfather had 4 possible selection or choice. 4 of them, meaning his 2 sons and his 2 grandsons. And amongst them, he chose me. आप जिस तरह से जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद शाह के 4 मुमकिन बिल्कुवा जानशीन थे, 2 बेटे और 2 पोते। मौला का एक इंटरव्यू मैंने कल सुना, यानी कि शाह करीम उल हुसैनी इमाम उल वक्त का इंटरव्यू, जिसमें आप फरमाते हैं, और ये बहुत ही पुराना इंटरव्यू है, शायद 1950s या 60s का है, जिसमें मौला फरमाते हैं कि मेरे दादा के पास 4 मुमकिनात थी, यानी कि इसके 2 बेटे और 2 पोते, उनमें से आपने मुझे चुना। अब आए हम इसको एनालाइज करते हैं। सो लेट्स कम एंड एनालाइज दिस। What do you think the reason was? And one reason is given most of the time. Most of the time, this one reason is given. And that is that Hazrat Imam Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alayhi knew that his son Prince Ali Khan would not survive him for more than 3 years. And therefore, he chose his grandson Karim to be 49th Imam. बहुत सारे रीजन जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे वडीलों ने, हमारे बड़ों ने हमको दिए हैं, उसमें से एक रीजन जो था वो बहुत ही कॉमन था, और वो क्या था कि इमाम जानते थे कि उनका बेटा प्रिंस अली खान दुनिया बाने 3 साल से ज्यादा नहीं जीने वाला है। उस वजह से उन्होंने ये इमामत अपने पोते यानी कि शाह करीम को इनायत की। तो फिर अगर ये बात हम मान लेते हैं तो सवाल ये होगा कि क्या इमाम बनने के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है? Let's say we do accept this logic, which is not a logical logic, but let's accept this logic for a minute. Then the question would be, is there a limit? How long does an imam have to be imam to become imam? Is there a limit of 3 years or 2 years or 5 years or any such thing? Remember, he, meaning Prince Ali Khan, survived Imam Sultan Muhammad Shah by 2 years, 10 months, 3 weeks. That is pretty close to 3 years. 2 years, 10 months, 3 weeks. Won't you say that's pretty close to 3 years? Is there a limit of 3 year minimum? In our history, there were 3 imams who had imamat less than
3 years, and most of them close to 2 years only. Imam Nizar, the first, 2 years. Imam Rukuddin Khair Shah, 2 years. Imam Zulfikar Ali, 2 years. That tells us there is no limit. There is no limit. अब अगर हम इस बात को मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ज्यादा लॉजिकल तो नहीं है, कि इमाम ने इसलिए अपने बेटे को इमामत नहीं दी क्योंकि वो दुनिया बाने 3 साल से भी कम दुनिया में जीने वाले थे और आप इस बात को जानते थे, तो फिर सवाल पैदा होगा कि क्या इमाम बनने के लिए कोई किसी अरसे का लिमिटेशन है, रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, हुक्म है कि भाई आपको कम से कम 3 साल इमाम रहना ही पड़ेगा? सबसे पहले हम देखें कि प्रिंस अली खान कितना टाइम दुनिया बाने हमारे दरमियान में थे 11 जुलाई 1957 के बाद। तो आपको गिनती में मैं मदद कर देता हूं। 2 साल 10 महीने 3 हफ्ते, यानी कि तकरीबन 3 साल। तो क्या कोई 3 साल की लिमिट है? क्या कोई इमाम हमारी 49 इमाम के दरमियान में कोई ऐसा इमाम आया है कि जो 3 साल से कम इमामत की हो? आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इमाम मिलेंगे। इमाम निजार 2 साल, इमाम रुकुद्दीन खैर शाह 2 साल, इमाम जुल्फिकार अली 2 साल। इसका मतलब इमाम की इमामत के लिए जरूरी नहीं है कि कोई इमाम 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल तक इमामत करे, ये जरूरी नहीं है। तो फिर दूसरी वजह देखते हैं, क्योंकि एक और वजह है जो लोग बयान करते हैं और ये ज्यादा लॉजिकल है इस आर्गुमेंट से, जो मोस्टली लोग पेश करते हैं उससे तो बेहतर ये है जो इमाम ने आज खुद अपनी विल में फरमाया कि मैं चाहता था कि मेरे बाद इमामत एक ऐसे यंग जवान बेटे में जाए कि जो दुनिया को इस जमाने की नजर से देख रहा हो। इसलिए मैंने अपने पोते को चुना इमाम के लिए। ये शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के अल्फाज हैं उनकी विल के अंदर। और शाह करीम ने भी अपने इंटरव्यू में यही फरमाया कि मेरे दादा चाहते थे कि एक यंग आदमी जो इस बदलती दुनिया को समझ सकता हो उसको इमामत देना चाहता था वो। तो शायद ये वजह थी कि उसने मुझे चुना। ये शाह करीम के अल्फाज हैं। सो there was one other reason that people do present, not as many but few. Most people will present this first reason, that he would not survive more than 3 years, which is not logical because there is no limitation that one must survive minimum of 3 years to be imam. There is no such thing. So there is one other reason
which is a little bit more logical than this one. And the reason I'm saying that is more logical, because Imam in himself in his will mentioned it, that I wanted to leave a young man who has better command of the time or the changing time which we were living in 1957. So I wanted to leave my son, meaning Prince Ali Khan's son, Kareem, to be my 49th Imam, my successor. तो ये लॉजिक थोड़ी बेहतर है पहली लॉजिक से, जो अमूमन लोग देते हैं, बल्कि तकरीबन सभी देते हैं. उससे दूसरी आर्ग्यूमेंट लॉजिक सही थी. So again, then the question comes that what about his other son, Prince Sadruddin? To your surprise, you know Prince Sadruddin was only 3 years older than Shah Karim. Only 3 years older than Shah Karim. Second, he was a young man and he understood the time as Imam wished. Third, he had just finished the education at the same Harvard University where Mola Bapa was going. Meaning all the logical thing, a young man, an educated man, and man who understood the new changing time, that all was present in Prince Sadruddin. Matter of fact, even better than Shah Karim. Why would I say that? Because he had finished the education at the Harvard, whereas Mola Bapa had to go back in 1959 to finish his education. So wouldn't it not be better if Prince Ali Khan was Imam for 3 years? That would have given Shah Karim chance to finish his Harvard University in 1959, and then he will be Mola Bapa, and that would be it. And the time did not change too much between 57 and 1960. So what would be the reason? That's the question. Because these two reasons which are given, not logical. It does not make too much logic sense. The rationale is not there. Then there has to be some other reason. तो उर्दू में थोड़ा बताता चलो, समझाता चलो कि जो सवाल पैदा हुआ था कि सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी विल में फरमाया था कि मैं एक ऐसे जवान आदमी को अपना इमाम बनाना चाहता हूं कि जो इस बदलती दुनिया को समझे और इस दुनिया में, यानी बदलती दुनिया में, पढ़ा लिखा हो. तो आपको शायद ताजुब होगा कि प्रिंस सदरुद्दीन सिर्फ 3 साल उम्र में शाह करीम से बड़े थे और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी जहां से मौला बापा जा रहे थे, उन्होंने फिनिश कर लिया था. यानी कि सेम उम्र, तकरीबन सेम एजुकेशन और सेम यूनिवर्सिटी, और उनका व्यू पॉइंट भी इस दुनिया के बारे में ऐसा ही था जैसा शाह करीम का. तो ये बात कि शायद ये वजह होगी, अब वहां पर भी ज्यादा लॉजिकल समझ में नहीं आ रहा है.
तो क्या हो रहा है कि हम वो काम कर रहे हैं कि जो हमें हमारे बड़ों को 75 साल पहले, 70 साल पहले, 60 साल पहले करना चाहिए था, पूछना चाहिए था, जमात को बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था। एक जगह पर इमाम ज़मान शाह करीम ने फरमाया, जब किसी ने पूछा कि या मौला क्या वजह हुई कि आपके वालिद को इमाम नहीं बनाने में आया, तो मौला ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी जमात पूछती तो मैं जरूर उनको समझाता, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है कि जब मौला का अमर आ जाए, फरमान आ जाए, तो सवाल नहीं होता है। ये हमारा यकीन है, ईमान है कि मौला के फरमान पर सवाल नहीं होता है। और जब मौला ने फरमा दिया कि मेरा पोता आपका अगला इमाम होगा, तो वहां पर सवालात खत्म हो जाते हैं। So one place, Shah Karim, in a conversation with a Momin was showing his curiosity that isn't it amazing, Mola Baba, meaning Shah Karim at the time, then no one asked you, why did your grandfather give you the imamat and not his son, as entire Jamaat at the time 100% were sure and believed that Wali-e-Ahd would be would be Prince Ali Khan. Aren't you surprised that no one asked you that question? A Momin was having conversation with Shah Karim, Imam ul Waqt. And Shah Karim said, only if they had come to me, I would have given them the answer and I would have made them understand. But no one came asking question. Now, that is true. As a believer, as a follower, as a smiley, when Imam gives you a farman, then all of the question are put to rest. There is no question. There is no ifs and buts. That is our belief and that is our iman. So I understand why there were no question. But there was a Jamaat, the Jamaat of Syria. They did not ask question, they just show their concern. And what does Imam Zaman, Shah Rahim ul Husseini Hazrat Imam said in his first farman? If you have a concern, if you have a worry, come to the Imam of the time, come to me. So they had concern. And the concern was, how do we understand the principle of Nurun ala Noor
from the Quran which applies to the Imam, then Imam would be Nurun ala Noor, Father Imam, Son Imam, Son Imam, Father Imam. How do we understand that? They had their concern. Upon that, Prince Ali Khan himself went to Syria. The pandal, the Didar hall, was full. In very short, very few words, he asked the Jamaat, do you believe I am your Imam? And Jamaat replied, Labbaik. Yes, we do believe. So Prince Ali Khan replied. Then I want you to take the bayat and follow your Imam, my son, Shah Karim, as your 49th Imam, as per will of my father, your 48th Imam. And Jamaat replied, Labbaik. You see how simple that was? Showing concern does not mean that you are Beiman. Showing concern does not mean that you are going against the Imam. Imam gives you permission that if you have a concern, if you have worry, come to the Imam of the time. Come to me. There's our living, present Imam Shah Rahim Al-Husaini Hazar Imam. तो जब आप को पता चला कि एक जमात यानी कि सीरिया की जमात को नूरन अला नूर के बारे में कुछ फिक्र है, तो प्रिंस अली खान फौरन से सीरिया तशरीफ ले गए। ये 1957 की बात है। पेंडोल भरा हुआ था, पूरी जमात हाजिर थी। आपने बहुत ही कम अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए जमात को शाह करीम की तरफ ले आए। आप स्टेज पर आते ही आपने पूछा, क्या क्या आप मुझे अपना इमाम मानते हैं? जमात ने जवाब दिया, लब्बैक, जी हम आपको इमाम मानते हैं। प्रिंस अली खान ने फरमाया, तो फिर ये मेरा हुक्म है कि तुम मेरे बेटे शाह करीम को अपना 49th इमाम तस्लीम करो, और ये मेरे वालिद आपके 48th इमाम की विल और विश है। जमात ने रिप्लाई किया, लब्बैक। आपने देखा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं था, और जमात का एक कंसर्न शो करना, एक वरी शो करना गलत नहीं है। क्योंकि हमारे हाजिर इमाम ने अपने पहले ही फरमान में फरमाया कि अगर आपके पास कोई वरी है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप अपने ज़माने के इमाम के पास आए, मेरे पास आए, मैं आपको जवाब दूंगा। बस यही काम हमारी सीरिया की जमात कर रही थी कि जो कुरान का कानून है, नूर अल्लाह नूर,
उसके बारे में हमें एक वरी है, कंसर्न है। वरना किसी इस्माइली को क्या सवाल हो सकता है इमाम के सामने? जब इमाम ने फरमा दिया तो मुर्शिद और मुरीद का जो रिश्ता है कि जो मुर्शिद बोले बस वही मुरीद करे, और उसमें कोई उच्च नीच नहीं होती है। So beautifully this thing was handled in 1957. Then if you have any question, you may ask. Let's go and take our course, which is the references of the Noor. So what we are about to do, as we talked about it last week, that we will cover 49 Noor references in the Quran. To read or not to read, I will leave that up to you. I will give you the gist of it. I will give you the cross references. Then I will let you think on it. Inshallah, our first Noor reference from the Quran in the form of a story. And you see why Imam is necessary and the Noor Imam is important for the humanity, for the Ummah and for the Jamaat. तो आए हम कुछ नूर के रेफरेंसेस को कुरान से देखते हैं। जिस तरह से पिछले हफ्ते बताया गया था कि हम नूर के रेफरेंस को देखेंगे। नूर के इन रेफरेंसेस को कुरान में पढ़ना आपका काम है। मैं सिर्फ आपको नंबर दे देता हूं और उसके बारे में बता देता हूं। पर्सनल सर्च फरमान है इमाम का। आपको पर्सनल सर्च करना है, ये इमाम का फरमान है। फिर आगे आपकी मर्जी है। सूरह बकरा की 2:17 और 2:20 में एक निशानी पेश की गई है कि क्यों जरूरी है कि हमारे पास इमाम और इमाम का नूर हो, क्यों जरूरी है। So we will start with two references of 2:17 and Surah 2:20. Surah 2, ayat 20. In between this ayat, there is a story told. And the story, the gist of the story is why it is necessary. Why is it necessary to have Imam and the Noor of the Imam always present? Not here and there once in a while, but always present. I will start myself from the Surah 2, ayat 16, and will go all the way to 20 to give you a complete understanding of this ayat. In the detail, you read the ayat yourself. It starts something like this, that there are some people who sell their iman, trade their iman for a very few things, meaning they sell their iman cheap. They trade their iman for the worldly goods. They leave
their Iman for no reason. And the example of them are of the two travelers through a jungle. And that jungle is through this lifetime. One with a lithium battery torch, bright light. Other with the match and sticks. They both start their journey in the jungle in this life. The one with the torch, the constant bright light, enters the jungle, which is a dark jungle, but due to the light, easily navigate throughout the jungle, whereas the other one, who does not have bright light but a match and stick in his hand, when he starts to walk in the jungle in this life, he bumps here and he bumps there. And whenever he cannot move forward, he uses one of the stick to light. Gather some wood, make a fire. Now he can see few feet away. So he starts to walk again. As he left his light, his Noor behind, he cannot see no more. He starts to bump into the things. He gets injured. He's completely lost in the darkness. So again, he light a stick, gather some wood, have some light, and walk in the light for few steps, for short time, short while. As he left that Noor behind, he cannot see no more. And again, he trips over, injured himself, and he gets lost in the darkness. And again, until one day, he has no more sticks to light. The match is empty. He has no Noor, no guidance, no hope, and nothing left to move forward. In such a darkness that he cannot see his one hand over the other. Completely lost. The gist of the story is those who had a light, once in a while, they follow the Prophet, they will leave the Prophets. They will follow the Imam, they will leave the Imam. They will follow the Peer, they will leave the Peer. They will follow the guide, they will leave the guide. They did not have a constant source of guidance from the Noor e Khudavandi. So therefore, they constantly struggle and eventually came so far that no more they can find their light. In Surah Hadith, ayat number 13, Allah talks about those people that on the day of the Qiyamah, they will see the Mu'mineen. They will be walking with the Noor. So they will say, "Oh, my brother, where did you find this Noor? Can you share that Noor with me?"
with us. And Mu'min will reply, go back and see, where did you lose your Noor? When did you lose that Noor? Did you left it at the time of Ibrahim, time of Musa, time of Isa, time of Muhammad, time of Ali? Where did you leave that Noor? Go back. Where did you leave that Noor? This is the gist and the moral of the story. उर्दू में क्विकली मैं समझाता चलूं कि क्यों जरूरी है कि हर हमेशा हमारे पास नूर मौजूद हो, हर हमेशा नूर मौजूद हो। तो कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर 16 से अगर आप आगाज करते हैं इसका 20 तक, तो कहानी कुछ यूं चलती है हमारे समझाने के लिए कि कुछ लोग हैं जो अपने ईमान को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच डालते हैं, दुनिया की सीट के लिए, दुनिया के पैसे के लिए, दुनिया की लालच के लिए। ला इल्मी की वजह से वो अपने ईमान को खो देते हैं। और अब वो ऐसी मिसाल है उनकी जैसे वो जंगल में अंधेरे में भटक जाते हैं। तो दो मुसाफिर की मिसाल दी है। एक ऐसा मुसाफिर है इस दुनिया में, एक ऐसे लोग इस दुनिया में जिसके पास इमाम के नूर की रोशनी है, वो आराम से इस जंगल के अंदर, इस दुनिया के अंदर इस नूर की रोशनी के साथ आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरे हैं जो अंधेरे में इस दुनिया के अंदर जंगल के अंदर दाखिल होते हैं। कभी कभार उनके पास रोशनी होती है, फिर जब वो रोशनी पीछे रह जाती है, वो उस नूर को पीछे छोड़ देते हैं, तो जंगल में भटक जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जब उनको और कुछ नहीं सूझता तो फिर वो रोशनी की तलाश करते हैं। फिर जब उनको रोशनी मिल जाती है तो थोड़े टाइम के लिए वो रोशनी के साथ चलते हैं और फिर खो देते हैं रोशनी को, और वो इस जंगल में भटक जाते हैं, इस दुनिया में भटक जाते हैं और उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अस खुद खुदा की नाफरमानी करते हुए इस नूर को छोड़ दिया जो खुदावंद ताला ने अस खुद हमारे दरमियान में उतारा था। तो ये इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी थी। सूरा 2 की, इसी सूरा की आयत नंबर 257 के अंदर खुदा इसी कहानी को आगे बढ़ाता है कि फिर खुदा जिसको चाहता है उसको अपने नूर की तरफ दौड़वनी देता है और उनको जहालत के अंधेरों से बाहर निकालकर नूर की तरफ ले आता है। So the next reference is same surah 257 in the continuation of the story, that Allah guides those who believe and bring them out of the darkness into the Noor. And the last reference for the day is the Surah 3, ayat 184, and that is Kitab Munir. Kitab Munir meaning the book which will give you the light, or the book with the light. Kitab has very many different meaning or understanding at this time in this reference. Kitab is Quran, but there is a living, speaking Quran. Kitab is guidance,
but there is a one living and speaking guide. Kitab Mubin is for the Prophet himself and Pashtan Pak after him. So not only Allah has left and given us the Imam and the Noor, but a living book, a living guide, a speaking guide, which will guide us on the Sirat al-Mustaqim. So I will stop here. It is up to you to read this ayat and follow the farman of the Imam that you must do personal search. Personal search is your command from the Imam Zaman. So let me stop here. अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं या अली मदद. Sumana, thank you so much for giving us this knowledge. This is a very curious thing you just mentioned about the Sultan Shah's two sons, that why he did not pick them to be one of them to be an imam, and he picked his grandson. So the thing is, why we all this almost 70 years we never asked this thing? Why this curiosity never arise in us to know that why this kanun, this law is like it's a broken. Why? What happened? So why this curiosity never arise in us? Actually, I think the curiosity was there, but the curiosity was not presented in the right manner and was not handled in the right manner. So in our old thinking, when our parents and grandparents asked that question, they were shut down by saying, you are Be'iman, don't ask the question. They were just shut down. Second, the people who, instead of asking question, the Jamaat, instead of asking question, they involve themselves in gossiping. Meaning, this curiosity turned into gossip. Oh, Prince Ali Khan was this, or Prince Ali Khan was that. How shameful is that? That they were talking about a son of the Imam and the father of the Imam backbiting and gossiping. Due to that dirty habit, bad habit, they themselves blocked from the right answer and the right question. Otherwise, Imam is always present as great source of knowledge and guidance. If we ask. But since we did not ask, or we did not know how to ask, or our curiosity turned into gossiping. My mother, she was a wise lady. She would tell us whenever we would be curious and ask question, she would say, it is good to ask question, but do not involve yourself in gossiping, because Prince Ali Khan, she would tell us that we thought for years he would be Wali-e-Ahd, and we saw him as Imam. So how can we backbite or gossip about the man we love, a son of the Imam, a father of the Imam, Nurani family? So she will refrain from those who would involve themselves in the bad habit of gossiping and backbiting. But
she was definitely a curious mind. My mother was not an educated lady, but very curious mind. So as we grew up with this question, and as we receive our answer by the farman of the Imam Shah Karim, personal search, learn, learn, learn. And when she understood the reason, I still remember her face. When she understood the reason, how happy she was. It was almost like she was saying, this was my lifetime purpose to find out why. Because she truly believed that one day she would get an answer. She did. Ji Kamre sahab.